Good morning, students. Now, in this video lecture, I am going to discuss the formal charge. The first question is, what is the meaning of formal charge? Suppose if I write an atom like sodium, or if I write an atom like iron. You know iron is element, sodium is also element. So if somebody asks you what is the charge present on this free sodium, naturally your answer will be 0. आपका जवाब होगा कि सर सोडियम पे जो चार्ज है वो 0 है. Similarly, if somebody asks you what is the charge, simply charge present on this iron, then your answer is again it is 0. But if we consider a simple ion means ion which is composed of a single atom, like we have chloride ion, it had 1 minus charge. Now if somebody asks you what is the charge present on it, the answer is it is your -1. Similarly, if we have say oxide ion, this ion is your oxide ion. So what is the charge present on this oxygen? We can say it is your simply -2. But for example, if we consider a polyatomic ion, polyatomic ion means for example if I write NH4 plus. Now this is made up of 1 nitrogen atom and 4 hydrogen atom. This ammonium ion is made up of your 1 nitrogen atom and 4 hydrogen atom. 1 nitrogen and 4 hydrogen. But it has only one positive charge. It means, what does it mean? It means the sum of charges. It means the sum of apparent charges. The sum of apparent charges present on one nitrogen and on 4 hydrogen, this must be equal to +1. कहने का ये मतलब हुआ कि जब आप ये देख रहे हो कि ये अमोनियम आयन है, ये अमोनियम आयन एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन से बना है, तो मान लीजिए जो भी चार्ज आपको समझ में आए इस नाइट्रोजन पे, जो भी चार्ज आपको आए हाइड्रोजन पे, चारों हाइड्रोजन पे, तो चारों हाइड्रोजन के चार्ज का आप सम कर दें और ये नाइट्रोजन पर जो चार्ज आपको लग रहा है उसे सम कर दें, then the total sum must be or equal to +1. Means in polyatomic ion, individual atom have some apparent charge, that is called your formal charge. For example, one more example, let us consider. Suppose if we write carbonate ion, CO3 2 minus. Say if we write, okay, this is the Lewis dot structure of your carbonate ion, in which we have formal charge like this. Suppose this carbon have formal charge 0, this oxygen have formal charge 0, this oxygen have formal charge say -1 and this oxygen have formal charge -1. ठीक है, ये बात अलग है कि ये फॉर्मल चार्ज आप इसमें -1 लिख रहे हैं, आप इसमें -1 लिख रहे हैं, आप इसको 0 लिख रहे हैं, आप इसको 0 लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, दैट वी विल डिस्कस, वो हम डिस्कस करेंगे. लेकिन मान लीजिए इस पर चार्ज आपको 0 लग रहा हो, इस पे चार्ज आपको 0
महसूस हो रहा हो, and you are feeling that it has a charge -1, it has a charge -1, then what is the total charge on carbonate? It will be 0 plus your -1 and again plus your -1, then you can say the total charge is your -2. So this is the meaning of your formal charge. Now for example, if we consider a polyatomic molecule like carbon dioxide. Now this carbon dioxide is made up of 1 carbon and 2 oxygen. Suppose this is the structure of carbon dioxide. As you know, आपको बता चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर होगा। तो मान लीजिए अगर इस कार्बन पे फॉर्मल चार्ज हमारा x है, एपरेंट चार्ज, इस ऑक्सीजन पे मेरा मान लीजिए y है टेम्पोरली, और इस पे अगर मेरा चार्ज z आ रहा है, इट मींस x plus y plus z must be equal to 0, because what is the total charge present on CO2? The answer is 0. So CO2 is your neutral molecule, it has no charge. Now let us see how we can calculate the formal charge present on an atom in a polyatomic molecule or in a polyatomic ion. So let us see the definition. In case of a polyatomic ion, the net charge is possessed by the ion as a whole. यानी जब आप कार्बोनेट लिखते हो तो इस पे कहते हो कि 2 माइनस चार्ज है ना, तो ये केवल एक ऑक्सीजन का चार्ज नहीं है, एज ए होल मींस 1 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन एटम बाय ए पर्टिकुलर possessed by the ion as a whole and not by a particular atom. Now what is formal charge? Formal charge on an atom is the apparent charge. Is the apparent charge, it is not the real charge. So how we can find out the formal charge? So that is the formula for the calculation of a formal charge. Formal charge on an atom, this equal to total number of valence electron in the free atom minus total number of unshared electron. डेफिनेशन को ध्यान से देखिए, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं अनशेयर्ड पेयर। नो, इट इज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगेन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहीं भी पेयर वर्ड मेरा यूज नहीं है, यह है आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड और यहां है टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड। ठीक है। नाउ let us consider an example, simplest example. The question is calculate the formal charge present on each atom in कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए ये डेफिनेशन को मिटाते हैं, इट हैज नो मीनिंग नाउ बिकॉज वी हैव आवर फार्मूला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, हमको कार्बन डाइऑक्साइड में हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना। Carbon dioxide is made up of 1 carbon atom and 2 oxygen atom. So ultimately there are 3 atoms. One is carbon and the 2 is your oxygen. तो दोनों ऑक्सीजन एटम का भी फॉर्मल चार्ज निकालेंगे और कार्बन का भी फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। To calculate it, first of all we have to draw the Lewis dot structure. So first of all we have to draw the Lewis dot structure. किसका Lewis dot structure आपको ड्रॉ करना है? कार्बन डाइऑक्साइड का। Now see, this is carbon, valence electron is 4.
Why valence electron is 4? Because atomic number of carbon is 6, so it is your 2 4. For oxygen atomic number is 8, तो ये हो गया 2 6, 2 6 हो गया. यहाँ मैंने ऑक्सीजन लिखा, this is 1 2 2 4 and 6. This is another oxygen 2 4 and 6. ये शेयरिंग हो गई, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन. शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. दिस इज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डेड. आप अनशेयर्ड बोलिए, हो सकता है किसी बुक में लिखा हो नॉन बॉन्डेड, एक ही मीनिंग है, चाहे आप अनशेयर्ड बोले या नॉन बॉन्डेड बोले. सो दिस इज नॉन बॉन्डेड, दिस इज नॉन बॉन्डेड, this is non-bonded, this is non-bonded, or this is unshared, this is unshared, this is shared, this is shared, this is shared and this is shared. ये दोनों फिर हो गया unshared. Now let us calculate the formal charge in this case on each atom. So first of all let us calculate on carbon atom. So let us calculate on कार्बन एटम. तो क्या लिखोगे आप? फॉर्मल चार्ज ऑन C मीन्स कार्बन एटम, दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम. फ्री एटम मीन्स कौन सा? कार्बन, क्योंकि हम कार्बन पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें, जिस पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे उसी को कंसीडर करेंगे. So total number of total number of valence electron in the free carbon atom. So what is the valence electron in free carbon atom? That is your 4. भाई कार्बन केवल कार्बन है तो बताइए कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है, तो हमने 4 लिख दिया. माइनस 4 and then we have minus, okay, this is minus. Total number of unshared electron, total number of unshared electron कहाँ? कार्बन पे. भाई टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन पे निकालना है, कार्बन का मीन्स कार्बन पे. सो ऑन कार्बन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन? यू सी इट इज योर 0, it is your 0 because all the electrons are shared. Then minus, okay, half into total number of shared electron, not shared pair, shared electrons. So it is 2, then 4, then 6, then 8. So it is your simply 8. Always there is a very simple idea. Total number of shared electron plus total number of unshared electron must be equal to 8. ये दोनों का सम 8 होना चाहिए, तभी तो ऑक्टेट होता है. ये 0 हो गया तो वो निश्चय ही 8 होगा. ठीक है, फिर भी आप इसको करके निकालें. कहता है यू नो इट इज योर 2 4 जा 8 and then it is your 4 minus 0 minus 4 and that is your 4 minus 4 and that is your 0. So what is the formal charge on carbon atom? The answer is your 0. Now let us see the formal charge on oxygen. अब हमने पहले ही बताया कि हो सकता है इस दो ऑक्सीजन में दोनों का फॉर्मल चार्ज सेम भी आए, हो सकता है दोनों का फॉर्मल चार्ज अलग भी आए. इट डिपेंड ऑन सिचुएशन, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा. कहता है लेट अस सपोज इफ वी राइट दिस इज ऑक्सीजन नंबर 1 टेम्पोरली एंड दिस इज ऑक्सीजन नंबर 2. ये हम अपनी सुविधा के लिए इसको लिख दिया ऑक्सीजन नंबर 1, इसको लिख दिया ऑक्सीजन नंबर 2. तो ऑक्सीजन नंबर 1 का फॉर्मल चार्ज हम इसका निकाल रहे हैं. सपोज करिए इसका जिसको हमने स्ट्रिक लगाया है उसका मैं निकाल रहा हूं. नाउ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री ऑक्सीजन. सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री ऑक्सीजन? 6. सो इट इज योर 6 देन माइनस, ओके,
total number of unshared electron. इस ऑक्सीजन पे देखिए कितना unshared electron है, जल्दी देखिए. On this oxygen we have how many unshared electron? 4. How many unshared? 2 इधर है और 2 यहाँ है. So it is 6 minus ये हो गया 4 minus half into total number of shared. इस ऑक्सीजन पे कितने shared इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 2 4 means 4 shared and 4 unshared. Okay, so it is 4, it is your 2 2 ja 4. You can write 6 minus 4 minus 2 यानी कि simply 6 minus 6 that is 0. Again it is your 0. So on oxygen number 1 means this oxygen, on this oxygen the formal charge is your 0. Now let us calculate the formal charge of your oxygen number 2. आप देखिएगा वो अभी 0 होगा because same type of environment is there. So we can write formal charge on oxygen that is O2. O2 means oxygen number 2. यहाँ हमने O ही लिखा but it means your oxygen number 2. Now say this is your oxygen number 2. This is your oxygen number 2. Now what is the formula? The formula is, okay, total number of valence electron oxygen that is 6. Then we have minus total number of shared electrons. See shared electron, total number of unshared. Total number of unshared पहले देखना है. Unshared देखिए कितना हो गया भाई 2 2 4. So it is simply 4. And then it will be half into total number of shared. इस ऑक्सीजन के लिए भी shared कितना हो गया 2 and 2 4. So it is 4. You can say again it is your 0. So for carbon it is 0. For oxygen number 1 it is 0. And again for oxygen number 2 it is 0. So what is the total sum of formal charge in CO2? You can say it is 0. And that's why CO2 is a neutral molecule. Now, for example, if we consider some other molecule, say sulfur dioxide. Say sulfur dioxide. Now, if we have to calculate, the question is calculate the formal charge on each atom in sulfur dioxide. देखिए कितना आसान है, तो रिपीट करते हैं. First of all, write the Lewis dot structure. This is sulfur. बता दिया आपको. There will be double bond. See, this is sulfur. It is 2. It is 4. It is 6. Here oxygen 2, 4 and 6. ये देखिए शेयरिंग हो गई. तो शेयरिंग जब हो गया आपका, आप देखिए शेयरिंग हो गया. इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया 2 2 4 2 6 2 8. सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा हो गया 2 4 6 8. नाउ इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इस सल्फर का भी ऑक्टेट. देयर इज ऑक्सीजन, इट इज 2 4 and 6. नाउ देयर विल बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड. देयर विल बी योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. देयर विल बी योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन दिस केस. Although it has only 6 electron, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. ये मैंने आपको पढ़ा चुके हैं, ये हम आपको बता चुके हैं that in this case there will be coordinate bond. So what will happen? See the situation. This pair is your shared pair. This electron is shared. These electrons are unshared. This is unshared. So you can draw a structure like this simply. This is double bond.
and this is single bond with 6 electron and there is 4. यहाँ भी देखिए ऑक्टेट हो गया 2 4 6 8 2 4 6 8 and this is unshared electron. तो अब सवाल उठता है फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर एटम. थोड़ा स्पीड करिए. What is the total number of valence electron in sulfur? What is the valence electron of sulfur? The valence electron of sulfur is 6. Okay, 6 minus, ठीक है, total number of unshared. देखिए सल्फर पे unshared कितना इलेक्ट्रॉन है? सल्फर पे unshared 2 इलेक्ट्रॉन है. So it is 2. Then we have minus 1 by 2 into total number of shared. शेयर देखिए यहाँ कितना हो गया. देखिए ये 3 बॉन्ड सल्फर के पास है. 1 2 3 मींस टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 6. यहाँ पर देखिए सल्फर के लिए 2 4 6 देख रहे हैं ना. सो इट इज योर 6. 6 मींस 2 3 are 6. We can write 6 minus 2 minus 3 that is equal to 6 minus 5 that is your plus 1. Do not write simply 1. 1 means it may be minus 1. So you have to write plus 1. अब 2 ऑक्सीजन है. देखिएगा दोनों ऑक्सीजन का अलग अलग होगा इसमें. In this case both oxygen have different. Now let us see कैसे इसको मिटा दिया सल्फर को. Suppose this is your OX and this is your OY temporarily. So formal charge on oxygen number X, OX, that is equal to total number of valence electron in free oxygen, that is your 6. Then 6 minus total number of unshared. इसकी बात करिए. यहाँ unshared कितना है देखिए, आप ही देखिए 2 and 2 4. Total unshared is your 4. So it is 4. Then we have minus half into total shared. यहाँ देखिए total shared कितना है. इस ऑक्सीजन पे देखिए यही ना X है आपका. This oxygen is oxygen number X. So shared is 4 because there is double bond. यहाँ डबल बॉन्ड है इसलिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए. तो 4 हो गए तो ये देखिए 2 2 जा 4 आप कर दीजिए. That is 6 minus 4 minus 2. That is 6 minus 6 is equal to your 0. So this will be your 0. This will be your 0. अब आप सोचो कि सल्फर पे आ गया आपको +1, एक ऑक्सीजन पे आ गया 0, तो आपको बता दें दूसरे ऑक्सीजन पे क्या आएगा? ऑटोमेटिकली इट मस्ट बी -1 सो दैट द सम मस्ट बी इक्वल टू 0. अब निकाल लो दूसरे ऑक्सीजन का. यहां पे देखो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर Y, that is your OY. Okay, valence electron that is 6 minus total number of unshared electron. यहां देखिए unshared electron कितने हो गए? 2 4 and 6. 2 4 and 6 6 हो गए. ओके 6 माइनस हाफ इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड. इस ऑक्सीजन के लिए शेयर्ड हो गया, इस ऑक्सीजन के लिए ये शेयर्ड होगा. देखिए हमने लिखा है शेयर्ड ओनली 2. सो इट इज योर 2. ये कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया. इट इज 6 minus 6 minus 1 that is your -1. So see it is OY that is your -1. तो इस तरीके से हम लोग किसी का भी फॉर्मल चार्ज निकालते हैं. Now one more example. One more example, say in ammonium ion. Let us consider your ammonium ion. Just consider ammonium ion. Okay. See, this is ammonium ion. You know, this is sharing with hydrogen. This is again sharing with another hydrogen. This is sharing with third hydrogen. And this is lone pair. आपको बता चुके अमोनिया में in case of ammonia there are 3 bond pair, 1 lone pair. Now this is H plus. This is your H plus because अमोनियम आयन कैसे बनेगा? अमोनियम आयन बनेगा अमोनिया प्लस योर H प्लस.
आप अमोनिया में एक H प्लस ऐड कर दीजिए, यू विल गेट अमोनियम आयन। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो ये जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, मान लीजिए आपको कोई पूछ दिया, सपोज करिए आपको पूछ दिया कि जो फोर्थ हाइड्रोजन, हम इस हाइड्रोजन पे इसको स्टार लगा दिया, इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा? बड़ा सिंपल वे में बता देते हैं, इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा? द फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 1 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। यहां साथ कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, देयर इज नो अनशेयर्ड, ओके, नो अनशेयर्ड मींस 0 माइनस हाफ इनटू शेयर्ड। नाउ दिस इज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर दिस हाइड्रोजन आल्सो। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए भी है और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के लिए भी है। तो ये हो गया into 2 कैंसिल, 1 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज सिंपली और 0। तो चारों हाइड्रोजन का आपको 0 होगा और शायद नाइट्रोजन का आप देखिएगा तो +1 आएगा ही आएगा। आप नाइट्रोजन का करके देखिए जल्दी से। नाइट्रोजन टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ अनशेयर्ड, नाइट्रोजन पे कोई अनशेयर्ड नहीं, नो अनशेयर्ड, ये तो शेयर्ड हो गया। अब ये अनशेयर्ड नहीं है, जब अमोनिया रहता तो अनशेयर्ड था, अब तो ये शेयर्ड हो गया, यानी कि 0 माइनस हाफ इनटू शेयर 2 4 6 8 दैट इज 8, 2 4 जा 8, सो 5 माइनस 0 माइनस 4 दैट इज +1। तो देखिए चारों हाइड्रोजन पे चार्ज आया 0, all 4 hydrogen formal charge 0, but nitrogen has formal charge +1. So what is the net charge on ammonium ion? +1. That's why we write ammonium ion as this type. तो यही आपका formal charge था and nothing more. I hope you can write formal charge on any atom very easily. एक होमवर्क ले लीजिए आप, कार्बोनेट आयन में कार्बन और तीनों ऑक्सीजन पे आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम इन कार्बोनेट आयन। थैंक यू।